friends. I am Sonali Bhatia from CreativeEdge, and we are here for a exciting session with the achievers of 2023 NID and JEE.B.Arch exams. क्रिएटिव एज के इस साल बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं एंड आई एम हियर विद टू ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू शेयर देयर जर्नी of preparation of these exams with all other aspirants. I welcome Aryan Gupta and Arush Garg to the studio. Aryan और Arush, please थोड़ा brief introduction दें आप बच्चों को. Hey everyone, I am Aryan Gupta and I am from Ludhiana. I opted for the commerce stream in my class 12th and my target exam was NIT and I joined the CreativeEdge 1 year ago. Yes, Arush. Hello, my name is Arush Garg. I am from Indore. I pursued PCM in my 12th grade. I joined CreativeEdge 1.5 years ago. Very nice. Aryan has just to brief, Aryan had given NID UG examination and scored All India rank 13, and Arush Garg had taken JEE.B.Arch and scored 98.83 percentile. आरुष एंड आर्यन, आप बहुत सारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे चीजें जानना चाहती हूँ विच विल इंस्पायर मोटिवेट द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जामिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स और ऐसी चीजें वो जानना चाहते हैं जो वो आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग, और इफ दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर दे ऑलरेडी हैव दिस थिंग्स इन माइंड कि क्या ये पॉसिबल है. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी. हाउ डिड यू थिंक अबाउट डूइंग डिजाइन और आर्किटेक्चर एज योर करियर स्ट्रीम? आर्यन, आपने कैसे सोचा कि आप डिजाइन एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं? Ma'am, I was inclined in the design field from my childhood only. Like मैं बहुत से ड्राइंग्स करता रहता था एंड मतलब क्रिएटिव पार्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. मतलब कुछ भी दिखता था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट्स बनाता रहता था. सो पहले तो मेरे को डिजाइन फील्ड के बारे में नहीं पता था, पर आगे जाके जब मैंने एक्सप्लोर किया कि मैंने इसी फील्ड में जाना आगे, तो मैंने ऑप्शंस देखे तो मेरे को एनआईडी एक अच्छा ऑप्शन लगा ऑप्ट करने के लिए. वेरी गुड. सो डिड योर पेरेंट्स सपोर्ट यू? बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये एक एप्रीहेंशन रहता है कि खुद तो इंक्लाइंड रहते हैं, दे वांटेड टू बी इन द डिजाइन फील्ड, बट देन समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट वेरी श्योर कि आप डिजाइन में कुछ अच्छा करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और इज देयर अ करियर आफ्टर डिजाइन? मेरे पेरेंट्स तो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव थे. मतलब वो बाकियों को ही कहते रहते थे कि इसको डिजाइन फील्ड में भेज. अच्छा, so you were the lucky one. यस मैम. वेरी गुड. आरुष, आपकी क्या स्टोरी है? आर्किटेक्चर जब सोचा तो क्या घर से सपोर्ट आया, या आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा ही कैसे कि मुझे आर्किटेक्चर में जाना चाहिए? Even I was very creative from bachpan se. Like I was creative. I used to draw things, create things. Cars, I was inclined. I used to make 3D models of buildings, cars. So I was into this creative field. And further architecture, I got motivated from my father. He's a colonizer and into real estate business. So I was motivated from my father to do further in this field. And further choosing it as a career field, after the counseling from CreativeEdge, I was clear that architecture is my goal to the success I want from that field. Very nice. So I can see that you both have been creative since childhood. So I would like to say all the aspirants, if you are doing any sort of creative work, not specifically design, पर कोई best out of waste बनाते हैं आप, कोई sketching करते हैं, कोई colors usage करते हैं, कोई medium के through painting करते हैं, clay work करते हैं, any sort of creativity that you show through any medium, you have a chance to get into this stream. Getting further, आप दोनों 12th standard इसी साल pursue कर रहे थे with your entrance examinations. So one very important thing that student would like to know, that were your preparation for entrance examination hampered? So since childhood, you both were inclined towards design, that I can see. So all the aspirants who are creative in any angle, they are doing some sketching work या किसी medium में draw कर रहे हैं, best out of waste करते हैं, कुछ भी innovative करते रहे हैं, you all have a gateway to design careers. Going further, आप दोनों ही इस साल 12th एग्जाम भी
अपीयर कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में रहता है कि बोर्ड्स के साथ इसको कैसे बैलेंस करेंगे, और क्या हम प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड में भी अच्छा अचीव कर सकते हैं। आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप दोनों ने क्या ऐसा स्ट्रैटेजी लगाई है, आप लोगों का क्या ऐसा मूल मंत्र था जिसके थ्रू आप ये दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाए। आर्यन, आप बताएं। लाइक मैम, मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मैं सुबह उठ के पढ़ लेता था। एंड मैंने कॉमर्स स्ट्रीम जैसे ली थी, तो ज़्यादातर थ्योरी थी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो मेरे को अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अच्छे से याद होता था। तो मैं स्टार्टिंग ऑफ माय डे में क्या कहते हैं, कॉमर्स मतलब अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर लेता था। एंड उसके बाद मैंने टाइम बांधा हुआ था कि 12 o'clock के बाद मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा, मतलब 1-2 घंटा ड्राइंग को दूंगा एंड बाकी टाइम एप्टीट्यूड को दूंगा। और ड्राइंग से मेरा थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता था, जो भी किया होता था। फिर उसके बाद मैं रात में अपना प्रैक्टिकल वर्क, अकाउंट्स का काम कर लेता। वेरी गुड। सो ड्राइंग स्ट्रीम सबसे बड़ा बोन इसलिए भी है क्योंकि सारा थेरेटिकल वर्क है ही नहीं, राइट। इफ यू कैन डू एप्टीट्यूड प्रैक्टिस ऑन एक्यूरेसी, ड्राइंग तो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर जैसा काम करता है। तो यू ऑल कैन टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि ड्राइंग तो आप उठते बैठते सोते जागते करने वाले बच्चे हैं, तो आपको इसको स्ट्रेस लेके नहीं करना चाहिए। आरुष, आपके लिए क्या रहा इस। For my preparation, balancing PCM and entrance exam was a bit difficult, but not impossible. I used to divide my day into two halves. The day part, I used to practice my entrance exams. Free time, I used to draw a lot of stuff near me, a pencil stand, a ball, a bat, maybe anything just that was around me. And at the night time, because I had to cover all the theory of physics and chemistry, I used to learn things at night basically and put into the course. वेरी नाइस। आरुष, आपने बहुत अच्छी चीज बताई क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर एस्पायरिंग बच्चों से आता है, क्योंकि पीसीएम में भी अच्छा स्कोर करना होता है और जेई और नाटा जैसी एग्जाम्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, आपका परसेंटेज यहाँ मायने रखता है। सो यू ब्यूटिफुली टोल्ड अस दैट दिस इज डुएबल एंड बहुत अच्छे से इन दोनों एग्जाम में साथ में स्कोर किया जा सकता है। आप दोनों ने अभी बहुत अच्छे से बोर्ड्स बैलेंस की प्रिपरेशन के साथ, पर प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइन एग्जाम में क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज आपने लगाई जिसके थ्रू आपको लगा कि ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने राइट कॉर्ड क्लिक कर दी है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपके लिए बहुत अच्छी वर्क की। आर्यन, आपको क्या लगता है। मैम, लाइक डेली स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चाहे कुछ भी हम ड्रॉ करें, थोड़ी दिन ब दिन हमारी इंप्रूवमेंट होती रहती है ड्राइंग में। मतलब पहले लाइंस मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं बनती थी, बट अब मैं बहुत फ्लुएंटली लाइंस बना सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी ड्रॉ करता रहता था, लाइव स्केचिंग करता रहता था। एंड उसके बाद जो मॉक्स क्रिएटिव एज ने प्रोवाइड करे थे, एक तो उसको अटेम्प्ट करने के बाद मोटिवेशन भी मिलती थी कि हाँ मेरे से अटेम्प्ट हो रहे हैं। एंड पता चल जाता था कि क्या आता है एनआईडी में। एंड उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करता रहूँ ताकि पता चलता रहे कि पास्ट ईयर पैटर्न भी था क्या था। वेरी नाइस। आरुष, आपने क्या ऐसा किया। uh, the strategy, like Aryan said, drawing must be the priority of every aspirant in their preparation. Along with that, PYQs and mock test was the one thing I thought were a boon to my success. Also, the thing which I thought I must have practiced more to score more was mathematics, which most of the students leave because it's a tough subject. Uh, all of us think that we leave this, uh, uh, we'll help ourselves on aptitude and drawing, but it's not like that. You'll have to practice maths, and if we divide our time properly, doing that is an easy task. So I would like to say that don't take any section very lightly. You Yes. have to focus on all the sections with full concentration, because यही स्कोर लेके आएगा। आपको अगर हायर Yes. रैंक्स में आना है तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ये पूरी जर्नी में आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो might have your good and bad days. All competitive exam preparation give you a very restless anxiety और demotivating feeling at times, जब आप स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हो या बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, यू आर नॉट अप टू योर एनर्जी। सो क्या, आई एम श्योर ऐसे कुछ समय आपके इस जर्नी में भी आए होंगे, और जब ऐसा कुछ
आपके सामने आया तो आपने उसको कैसे फाइट बैक किया? हाउ डिड यू बाउंस बैक, आर्यन? यस मैम, डेफिनेटली। मेरे प्रिपरेशन के वक्त भी मेरे को बहुत ऐसे रेस्टलेसनेस होती थी कि हाँ मेरे से क्लियर होगा या नहीं होगा। बट मेरे पेरेंट्स बहुत एक सपोर्टिव थे। अगर वो जान जाते थे कि हाँ कि मैं आज लो फील कर रहा हूँ, तो वो कहते थे चल आजा बाहर घूमने चलते हैं कहीं। या मेरा भाई कहता था आजा मूवी देख लेते हैं कोई, तो ऐसे थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। फिर उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन दोबारा करनी शुरू कर देता था। एंड प्लस जैसे मैंने पहले बोला था कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने से भी एक अच्छी मोटिवेशन आ जाती थी मेरे को कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ मॉक टेस्ट में, तो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। मॉक टेस्ट जैसे आप कई बार, आपने अभी आर्यन बोला कि आपने मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए, इनसे स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें आपने पिक की जो आपको लगता है कि दैट रियली वर्कड फॉर दोस 3 hours दैट यू गेव योर पेपर? ऐसी क्या चीजें मैम, आपको लगता है जो... like design thinking questions are very important for an NID exam. Like there will be one or two question on design thinking, and the next is the storytelling. Like you should be able to create a story. Like इस बार भी NID में क्वेश्चन आया था कि they just gave the beginning of the story and the end of the story. So we have to just create the story. एंड राजेंद्र सर ने भी हमें बोला था कि आपको स्टोरी पे उस पर फोकस करना है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो मैंने भी उसमें ऐसे ही दिखाया था कि मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने दिखा दिया था कि लड़की के डॉग ने बकेट को तोड़ दिया है। एंड मैंने उस पे कि उसने पॉलीथीन और टेप से उस बकेट को जोड़ के पानी भर लिया था बकेट। ओके, तो लाइक वो ये क्रिएटिव क्रिएटिव पार्टी देखते हैं नाइटी वाले भी, तो ये आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो इन पे ज्यादा फोकस किया। वेरी नाइस। आपने बहुत राइटली कहा कि एनआईडी, फॉर दैट मैटर एनी डिजाइन एग्जाम, आपके आइडियाज इवैल्यूएट किए जाते हैं। दे आर नॉट सीइंग हाउ ग्रेट इज योर ड्राइंग। ऑब्वियसली ड्राइंग से आपका मैसेज पूरा कन्वे होना चाहिए, उस तरीके का ड्राइंग हो, पर आपके आइडियाज को इवैल्यूएट किया जाता है, विच यू राइटली सेड कि क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपको एक यूनिक आइडिया के साथ यू हैव टू कम अप। वेरी नाइसली सेड। आई एम श्योर आरुष, आपके, क्योंकि पीसीएम और जेई कर रहे थे, दोनों ही हार्ड एग्जाम्स हैं, आपके इस जर्नी में भी ऐसे कुछ टाइम आए होंगे जब आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे? Yes, there were many times during my preparation where I had bad times. I used to talk with my parents. They were very supportive. I used to tell them I'm feeling like this. I'm not getting marks. What should I do? I'm not clear about my career. What should I do? They used to tell me just leave everything for a minute. Think of yourself. Are you that student? You are such a good student from like बचपन से you are a good student. Learning अच्छी है and you can score well. They used to motivate me a lot, like every parent does. Also, my mentors guided me in my preparation of the questions, telling me the right way to do things, like which I thought was an edge for me. Like when I got demotivated, there were many times my mentors helped me to get on the right path by scolding me or telling me in a friendly manner. Everything was helpful for me. ग्रेट। सो इन इन दो आंसर्स से मुझे ये समझ में आता है कि जब भी कोई भी एस्पिरेंट अपनी एग्जाम्स के लिए ये फीलिंग लेता है कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और आई एम नॉट डूइंग अप टू द मार्क, please speak to your parents, and I would request all the parents to be very supportive to kids. They are trying their best to get through this exam, or parents can be a very motivating pillar for these kids. At the same time, mentors will really guide you well. So जितने भी aspirants हैं, अगर if you are doing it through a guide or a mentor, please speak to them very open hearted. You should discuss your problems, you should discuss your limitations with them, so that they can guide you well and pull you off whatever you are going through. So I am sure कि ये चीजें बहुत वैल्यू रखती है आपके प्रिपरेशन में, एंड डे टू डे प्रिपरेशन लीड्स टू यू अ ग्रेट रिजल्ट, राइट? अभी हमने बात कर ली क्या स्ट्रैटेजीज काम की, क्या मोटिवेशन लिया। एक चीज ऐसे पूछनी चाहती हूँ, शायद आपने वो गलती की हो या ना की हो, डिजाइन एस्पिरेंट्स या आर्किटेक्चर एग्जाम एस्पिरेंट्स को कुछ ऐसा बता पाएं जो आपको लगता है प्रिपरेशन में रिफ्रेन करना चाहिए करने से। शायद आपने रिफ्रेन किया हो या नहीं कर पाए हो, वो अलग बात है, आज आप अचीवर्स हैं, बट स्टिल यू कैन गाइड देम कि ये चीज करने से रिफ्रेन करें, तो प्रिपरेशन पे और कंसंट्रेट कर पाएंगे। ऐसी क्या चीज हो सकती है आर्यन? Ma'am, first thing is that the students focus more on the boards and
दे थिंक दैट कि एंट्रेंसेस हम बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, पहले बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट आजकल हर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस ही मैटर करता है। एनआईडी के लिए भी क्राइटेरिया यही था कि आपको ऑलमोस्ट 50-60% चाहिए बोर्ड्स में, मेनली तो आपके क्रिएटिव पार्ट पे ही आपको एनआईडी में लिया जाएगा। Yes. तो एक यही था, बट कभी कभी मैं भी बोर्ड्स के लिए जाता टूवर्ड्स ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता था कि हाँ पढ़ लो थोड़ा, बट मेरे ब्रदर और सिस्टर और फैकल्टी भी कहते रहते थे कि नहीं, ये एंट्रेंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। बैलेंस स्ट्राइक करना इज द की। यस आप सर, किसी यस। भी एक चीज को ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो यू विल लूज द एसेंस ऑफ इट। आरुष, आपके लिए क्या रहा? One thing I would suggest all the aspirants to not take for granted is maths, which I took for granted, and I thought that I could easily have scored better marks than what I have scored right now, because I took maths for granted because I thought it was a difficult subject. I didn't practice it that much that I could attempt much questions of the that in exam confidently. So one thing that I would suggest all the architecture aspirants is to practice maths as much they can and manage their time in the paper. And while drawing also, one must have the one must have to tally time, because at the end you have to do that drawing in half an hour maximum time in JE. सम अप योर थिंग्स, आई वुड से कोई चीज से डरना नहीं है, कोई सेक्शन से। Yes. प्रिपरेशन है, हमें करना ही है। जब एग्जाम फेस करने का हमने इरादा कर लिया है तो हमें उस चीज को फेस करना है। there might be some sections which are very difficult, which are not very doesn't come very easy to you, but that's fine. आप जो अच्छा कर पाते हैं उस पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, but don't leave any section thinking कि I fear math or I don't like aptitude. Please don't judge the section by the weightage of the section in the exam. Give your best shot to all sections. That is the key to score high and go on the rank. Otherwise qualify हो जाते हैं पर ranks नहीं आ पाते, right? You still have one more attempt, Arush, for JBR. I'm sure this mistake can be rectified and you can work on it and score higher than this. Um, Listening to all this, I can see that you've prepared well for the year. आपके और भी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आई एम श्योर कि सबकी प्रिपरेशन लेवल डिफरेंट रहती है, बट देर इज वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज बिन आस्क्ड बाय चिल्ड्रन, दैट इज मेंटरशिप रिक्वायर्ड। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ, तो मैं खुद ही एग्जाम प्लान कर सकता हूँ क्योंकि एप्टीट्यूड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट देन डज मेंटरशिप हैज अ रोल इन दिस? आपको लगता है कि क्योंकि आपने मेंटरशिप ली है और आपके आई एम श्योर आसपास फ्रेंड्स हैं जो शायद नहीं ले पाए या नहीं लेना चाहा, उनके रिजल्ट्स में आपने डिफरेंस देखा क्योंकि आपने मेंटरशिप ली और गाइडेड पढ़ाई की, तो डज दैट मेक सेंस? मैम मेंटरशिप प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल, कि जैसे अब एनआईडी के एग्जाम्स में पहले हमें लास्ट मिनट टिप्स दी गई थी कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, एंड प्रॉपर की नोट्स बना के आने की, हाँ जिससे पता चल जाता है कि हमारे हम थिंक कैसे कर रहे हैं। तो उस ऐसी टिप्स बहुत काम आती हैं क्योंकि हमारे स्कोर को इम्प्रूव कर देती हैं, और प्लस ऐसी भी टिप्स दी हमें मेंटरशिप के कारण ऐसे पता चल जाता है कि क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली और कितने टाइम में सॉल्व करना है। तो yes, my mentorship played a very important role. डिड द कंटेंट आल्सो हेल्प यू अ लॉट? बिकॉज जैसे आपने बोला आपने बहुत सारे मॉक्स लगाए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए, तो इसमें क्या असेसमेंट ने भी रोल प्ले किया? क्या आपको? यस मैम, असेसमेंट ने भी बहुत हेल्प किया था मेरे को, लाइक जैसे जीके भी डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते रहते थे पोर्टल पे, तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में भी हेल्प हुई। प्लस जो क्रिएटिव एज का लॉजिकल वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाली बुक्स थी, मैंने वो अच्छे से सॉल्व कर ली थी। तो एप्टीट्यूड पार्ट में मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी नहीं आई थी, तो अच्छे से हो गया था मेरे से। एंड कुछ क्वेश्चंस भी आए थे सिमिलर से जो बुक्स में थे, तो इसलिए हेल्प हो गया। मतलब जीके का क्वेश्चन आया था एक कि जापान में फ्लावर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन क्या आता है, तो क्लास में ये हमें कराया था जीके में, जो जीके की क्लास हुई थी। Yes, ग्रेट, सो द कंटेंट आल्सो हेल्प्ड यू। आरुष, आपके केस में कैसा रहा? Ma'am, mentorship, I would suggest that it was very helpful for me. Even I was creative from my childhood, but that grooming is required. Doing things within the time limit, so having a helping hand always at home would not help you conquer in the examinations.
doing in aptitude also, it may seem easy, but the right approach, the timing and all, I guess that mentorship can make these easy. One can practice to do this by their own, but why to take a chance Yeah. at such a time for doing things easily and in a better way? I would suggest that one must take mentorship, because I have seen my friends struggling because they have not taken mentorship. The level of questions I had practiced, the mocks I had given, they were unaware of all these things. तो आई वुड टेल ऑल द एस्पिरेंट्स, बहुत बार ये डाउट आता है कि हम सब कुछ एक साथ कैसे करेंगे, ट्यूशन जाएंगे, क्लासेस भी लेंगे, बट ये इन्हीं 1 या 2 साल का स्ट्रगल है विच इज गोइंग टू रियली कार्व योर करियर। तो इन 2 साल के लिए या 1 साल आप जो प्रिपरेशन में डाल रहे हैं, उनमें आप कोशिश करें कि ये चीज को प्रायोरिटी दें कि आप जितना ज्यादा रिगरस अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे पढ़ाई में और प्रिपरेशन में, इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। आज आप दोनों से बात करके मुझे यकीन है कि हमारे बहुत सारे डिजाइन एस्पिरेंट्स, आर्किटेक्चर एग्जाम एस्पिरेंट्स ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, कुछ नोट्स बनाए होंगे जो वो अपने प्रिपरेशन के टाइम में ध्यान रखेंगे या उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू रियली thank you all and tell you, if you require any guidance of such kind or any career counseling, you can come to our channel on YouTube, and we have very helpful, informative sessions coming up very frequently. And you can subscribe the channel to know more such upcoming videos, or get in touch with us on our helpline number, which is given below. Thank you very much, Aryan and Ayush. It was lovely talking to both of you, and see you again. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.